start today. Beta, this chapter is War of Independence. Chapter 3 of history is War of Independence. War of Independence is chapter 3. Beta, 1857 was the year when Indians fought war to get independence from the oppressive British rule. Indians called Indians called it War of Independence. Indians called it War of Independence. ब्रिटिश इसको कहते थे इंडियन रिवोल्ट. British called it, however, British called it Indian revolt. British called it Indian revolt, या और भी कुछ कहा था ब्रिटिश ने इसको रिवोल्ट के अलावा. ब्रिटिश कॉल्ड इट इंडियन रिवोल्ट के अलावा ब्रिटिश ने इसको क्या कहा था? इंडियन म्यूटनी. इंडियन म्यूटनी. Can anyone tell what is the meaning of the word mutiny? Yes, anyone? What is mutiny? What is mutiny? Online students, what is mutiny? Sir, मतलब separating from your group. Rebellion. Rebellion. कौन rebellion करता है तो उसको हम mutiny कहते हैं. There is a specific type of rebellion which is called mutiny. Sir, army के. Very good नासिर जमाल. जब आर्मी के अंदर अपने सोल्जर रिबेलियन करते हैं तो उसको म्यूटनी कहते हैं. When soldiers, mutiny is, मैं लिखवा देता हूं, mutiny is when soldiers of army rebel, when soldiers of army rebel against their officers. This is called mutiny. Is it clear, beta? The online students, is it clear, beta? When the soldiers rebel against their officers, तो War of Independence को why British called it mutiny? British ने इसको mutiny क्यों कहा था? Why British called it mutiny? जी बेटा, British called it mutiny because British called it mutiny because British called it mutiny because they faced rebellions by the British. They faced rebellion by the Indian soldiers, by the Indian sepoys or soldiers, by the Indian soldiers और sepoys. सिपाही किसको कहते हैं? सिपाही से निकला ये. It is a word derived from सिपाही, सिपाही. तो अब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बैकग्राउंड आपको पता चल गया क्यों. फॉर इंडियंस इट वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Indians fought that war to get independence from the
to get independence from the British rule? Online students, from the British rule. Is it clear? The online students, Indians got independence from which thing? From the British rule. Is it clear everyone? अब बेटा इस वॉर की कॉजेज के ऊपर बात करते हैं. We will talk about the causes of war. बेटा वॉर की देखिए, दिस इज अ कंप्लीट इवेंट. दिस इज अ कंप्लीट इवेंट. अब इस वॉर की कुछ कॉजेज भी हैं. देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर. देर आर बहुत सारी देर करके आ जाते हो, बहुत देर. 10 मिनट आप लोगों ने जाया किए. ये हमने कल से मैं आ जाने नहीं दूंगा आप लोगों को. अच्छा, इधर 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 मुजम्मल, इधर 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 से दूर हो जाओ, आगे वाली सीट पे. यसरान आप इधर आ जाओ. अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, the war of independence was an event in the history of the subcontinent. There were so many causes behind it. Is that clear? अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है. अब हम इसकी दो तरह की causes of war of independence करेंगे. We will write the actual topic of this question, this chapter, causes of war of independence. G online students, there are two major types or the causes of war. There are two types of causes of war. Okay. There are two types of causes of war of independence. The first types of causes are called long-term causes. Long-term causes. What were the long-term causes of war of independence? What were Sir, the, unfair British policies. Banning of Azan. yes, beta. And long-term causes के बाद there were few Short-term short. causes. Sir, वो greased cartridges issue. Yes, beta. Yes, beta. Short-term causes. नहीं, causes the causes of war में ये है कि Indians ने war जो है, why they started war, why Indians started war against them. देखें, मेरी और अयान की लड़ाई होती है, कोई अयान 3-4 है, जो भी समझ ले जी. अयान शेरदिल की और मेरी लड़ाई हो जाती है. ठीक है. अब अयान जो है शेरदिल के साथ मेरी लड़ाई एक दिन होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दैट वाज ओनली वन कॉज. मे बी उस बंदे, वो बंदा या हम दोनों आपस में काफी अरसे से एक दूसरे को डिसलाइक करते रहे, या कभी अयान ने मेरे बारे में कुछ वर्ड्स बोले हों, कभी मैंने उसके बारे में बोले हों, कभी उसने मेरे बारे में कुछ कहा हो किसी को. देखिए, लड़ाई कभी भी एक दिन नहीं होती. कोई बंदा आपको बुरा लगता है तो उससे लड़ाई के पीछे पहले कुछ कॉजेस बनती हैं, बैकग्राउंड बनता है. आफ्टर दैट द एक्चुअल फाइट टेक्स प्लेस. ऐसा होता है या नहीं होता? अगर दो बंदों में ब्रिटिश में लड़ाई हुई तो वर देयर causes before 1857? Were there things before 1857? क्या इंडियंस जो हैं उनके साथ ब्रिटिश ने कुछ ऐसा 1857 से पहले किया था? What was the long-term thing? Now just think about the policies which British introduced, and all these policies had negative impact on Indians. कौन सी पॉलिसीज आपने कल की और परसों की, मतलब मंडे एंड ट्यूसडे की क्लास में आपने की है? Political, religious, railway. Political policies, social policies, economic policies, religious policies, military policies, educational policies. अब जितनी भी policies उठाए, were all these policies liked by Indians or disliked by Indians? Dislike. They dislike. तो इन सारी पॉलिसीज की वजह से इंडियंस के माइंड पे क्या हुआ?
what happened in the minds of, in the hearts of Indians against the British? Was there anything positive against in the hearts of Indians regarding the British? No. तो आप क्या कहेंगे कि everything was against the British. Is it clear बेटा? जी ठीक है, ये हमारे पास एक मेन चीज होगी. डन डन हो गया बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा 1 सेकंड से वेट. Okay बेटा, next is long-term causes of War of Independence. Sorry beta, long-term causes. There are so many long-term causes because of the policies of the British. The hatred against the British developed over the years. 60-70 सालों का जो गुस्सा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो किस जगह पे, किस इवेंट में निकाला इंडियंस ने? इन war of independence, in the form of War of Independence. Now I'm just writing the long-term causes of war. The first major long-term cause was economic causes. शजीन लोग जो है ना, ये पीछे टेरेस पे जाते हैं, फिर से बंद करें और दूसरा उनको वार्न कर रहे हैं और उन्हें बता दें आप ही. तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बन जाएंगी? जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने, पीछे वाली इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं which economic policies you people have written. Just check your economic policies. Online students, please check your economic policies. Heavy taxation, that is the first policy. Second, what was the second policy which became the economic policies? में check करें अबिहा. Indian handmade cloth had high international demand as compared to factory-made British cloth. To reduce this competition, they cut the hands of Indian weavers. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. फिर उसके बाद सेकंड, this point is basically के War of Independence की इकोनॉमिक कॉज के अंदर we have another point. That point is promotion of cash crops, rather food crops या grain crops, rather food crops. Okay. Next, third point is cutting the hands of Indian weavers, cotton weavers. Cutting hands of Indian cotton. सर ये भी हमने पॉलिसीज में किया था ना? बिल्कुल, ये सारी चीजें हमने पॉलिसीज में की थी. अब इन तीनों पॉइंट्स की वजह से अब इसका how these economic policies became the cause of war. Due to these policies, yeah, due to these things, yeah, yes beta, due to these steps, resentment against the British increased. Resentment against the British increased
Therefore, they fought war for economic rights. Therefore, they fought war of independence for economic rights. Yes, online students. Is it clear, beta? Is it clear? Yes, no. Yes, sir. This thing right in front of economic causes. This thing is basically called analysis of the point or the link with the question statement as well. मैंने इसको प्रूव किया है कि इनकी वजह से मसला क्या बना. Why we call them the causes of war. ये इस तरीके से आपने इसको लिंक कर दिया. The second policy. What was the second policy? That was called social policies. Social policies. In the social policies, we have Indians as second-class citizen, Indians as second-class citizens. Their language was replaced with English, was replaced with English. British banned many of their traditions, like Sati and Thagi. Beta, British banned so many traditions. Rafe and Rubab. Beta, बहुत लेट आए हैं आप क्लास में. Rafe and Rubab. बेटा आप लोगों ने 50% क्लास मिस कर दी है. हाँ? सर मैं अभी ज्वाइन मैं 10 मिनट You पहले joined 5 minutes late. You joined 5 minutes earlier. You missed 15 minutes. Okay. Next, beta, what was the impact of these social policies which became the causes of war? Social policies became causes. Social policies became social causes as well. Now, due to these social differences and modifications by the Indians, by the British caused war of independence as they were not given social liberty and equality in their own country. And equality in their own country. तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या समझा कि हमें क्या करना चाहिए अपने राइट्स के लिए. What was the method through which Indians got their social rights? What was the best way to get the social rights in India? To get the liberty from the British hostile rule. British के जो hostile rule था उससे independence ले ली जाए. That is the only best way. Is it clear? Part 3. Reason 3. That was political reasons of war of independence.
if we talk about the political reasons of War of Independence, if we talk about the political reasons of War of Independence, beta, the first main reason was policies, disputed policies like doctrine of lapse, ये एक नेगेटिव चीज थी। वो इसकी आगे एग्जांपल्स काफी हैं, तो वो आप लिख सकते हैं सारी। इसके अलावा और ब्रिटिश की गलत पॉलिटिकल स्टेप क्या था? व्हाट वाज द नेगेटिव पॉलिटिकल स्टेप ऑफ द ब्रिटिश? एनी अदर? दैट वाज disrespect of, The disrespect of Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. yes, disrespect of Mughal emperor. Yes beta, Bahadur Shah Zafar. Even the participation of Indians in the political apparatus of the British, political system of the British, less participation of Indians in political system of the British, ये तीन चीजें आपकी आ गई बेटा। इन सारे पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज? देयरफॉर Indians became anti-British due to less political rights and cunning policies which offended many rulers of princely states, therefore they started war to get political independence. Therefore, yeah, hence they fought war. They fought war for independence. Is it clear, beta? Done, everyone? इसके बाद next beta, we will move towards next reason. The next point is the fourth main policy of the British which caused War of Independence. Beta, that was religious policies of the British. Religious policies of the British ने क्या किया? Religious policies में Christianity को spread किया. British spread the religion Christianity. Number 4, religious causes of war. War of Independence. Beta, in the religious causes of War of Independence, religion ने British ने क्या किया था? British spread या converted. Yes, beta. Forcefully banned few religious
traditions of Indians. This is the first point. और ब्रिटिश ने spread of Christianity and forceful conversions, spread of Greece, Christianity. Carthage. यस बेटा, ग्रीस कार्टेज जो है ना वो शॉर्ट टर्म है, although कि वो भी रिलीजियस कॉज है लेकिन वो शॉर्ट टर्म कॉज है. Forceful spread of Christianity and forceful conversion of Indians into which religion? Christian. Into Christianity. Forcefully Indians were converted into Christianity. In सारे points से what happened due to these points? Due to these points, hatred due to less religious freedom and they fought war of independence to get freedom of practice of practicing their religion. They fought. Right? Military. अच्छा, ये वाला जो है ये आपका इसका लिंक बन गया. Number 5 is military causes. Military causes. Military causes. Sepoys were mostly Indians. बेटा जो ब्रिटिश थे क्या उनके पास वो सारे सिपाहीज इंग्लैंड से लेके आए थे? क्या सोल्जर सारे इंग्लैंड से लेके आए थे आर्मी में? फ्रॉम वेयर दे हायर्ड द सोल्जर्स इन आर्मी? सर सारे इंडियंस थे. सारे इंडियंस थे. सिपाहीज आर मोस्टली इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी. who were mistreated. उनको मिसट्रीट क्या किया था बेटा? इंडियंस वर मिसट्रीटेड बाय द ब्रिटिश, लाइक sent far away from their homelands, far away from. सर और ये भी था वो जो हिंदूस थे उनके लिए वो उनको शिप से भेजा जाता था और सी जर्नी उनके रिलीजन में मतलब हाँ, वो है उनको सी जर्नी डिस्करेज हुई है. प्रोहिबिटेड था. एक तो उनको उनके इलाकों से दूर भेज दिया जाता था, मदरलैंड से. दूसरा, लो सैलरीज. इसके अलावा नो प्रमोशंस. बेटा अगर आपकी प्रमोशन ही नहीं होनी, आप पढ़ लिख भी जाओ, आप हाई रैंक ऑफिसर नहीं बन सकते, तो क्या आपके माइंड में जरा सी भी रिबेलियन थॉट नहीं आएगी? बताएं मुझे, वुड देयर बी एनी रिबेलियन थॉट? आपके माइंड में एक रिबेलियन थॉट आएगा ना कि ऑब्वियसली आपको राइट्स नहीं मिल रहे, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर फाइटिंग फॉर देम एंड यू आर नॉट गेटिंग ड्यू शेयर. तो आपका एक दिमाग तो खराब होगा. Hence, sepoys were the one who started war of independence for their rights, due to
their poor life standards in British Army. ब्रिटिश आर्मी के अंदर उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स क्या थे? बहुत ज्यादा, देयर वर वेरी पुअर लाइफ स्टैंडर्ड्स। ना उनको सैलरी टाइम पे मिलती थी, ना उनको खाना टाइम पे मिलता था, दूर दूर के इलाकों में भेज देते थे। ये सब कुछ ब्रिटिश ने उनके साथ किया। इन सारी चीजों को इंडियंस ने काफी अरसे तक बर्दाश्त किया। पता है, इंडियंस ने पहले दिन ही फाइट नहीं कर लिया, ऑल्दो ब्रिटिश स्टार्टेड सच पॉलिसीज फ्रॉम 1773, बट व्हेन डिड दे स्टार्ट वॉर? जी बेटा इज़ियान, कब उन्होंने ये पॉलिसीज, तो ब्रिटिश ने बहुत पहले से स्टार्ट की थी, लेकिन व्हेन डिड दे स्टार्ट वॉर? 1857. 7. What happened in 1857? There was an issue. सर वो मंगल पांडे एक बेटा। सोल्जर था Yes, बंगाल बेटा। का। यस बेटा, ग्रीस्ड कार्टेज इशू मैंने ये निकाला है। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है ग्रीस्ड कार्टेजेस की। दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। आपको यस बेटा मैं हाँ, ये ग्रीस्ड वाला जो पार्ट है, ये वाली साइड इसकी ग्रीस्ड होती थी। ये साइड, इस साइड पे क्या करते थे? ग्रीस करते थे। एक साइड पे बुलेट और एक साइड पे ग्रीस्ड, और ग्रीस करने के बाद इसको बाइट करना पड़ता था। बाइट किससे करने आपने? बाइट करके ओपन करना है ना। यू हैव टू सर और ओपन इसमें इट बाय बाइटिंग इट पिग ऑफ। और काउ की फैट यूज हुई थी, तो पिग मुस्लिम्स Yes. के लिए हराम था और काउ हिंदूज के लिए Yes, बेटा। सेपरेट। तो ये ग्रीस्ड कार्टेज इशू वाज द मेजर इंसिडेंट। वो हमारी शॉर्ट टर्म कॉस्ट पे चला जाएगा। दैट इज बेसिकली दैट इज शॉर्ट टर्म कॉज। ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट में इधर से लिखवा रहा हूं आपको। बेटा जल्दी से करें, जल्दी से करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से बेटा ये कर लें। इस जुमे का टेस्ट में अभी एंड पे आपको बताता हूँ। वही टोपोग्राफी हमने करना है। मैंने आज बोला भी था टोपोग्राफी की वर्कबुक लेके आनी है। लाए में जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने सबने ले लिया? मैंने भेज भी दिया था। जी सर ले। जी बेटा, जी बेटा क्या हो गया टेस्ट का? हिस्ट्री का भी होगा। हिस्ट्री का सिर्फ 2 सवाल दूंगा, उन्हीं में से एक क्वेश्चन दूंगा बस। देयर विल बी ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक आपको मैंने देना है। वो टेस्ट है एक ही। इज इट क्लियर? मैं बता दूंगा आज। मैं दोनों सवाल भी सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है? जो आ रहे हैं वो भी, बस याद कर। जी बेटा, ये चैप्टर आपने, मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये वर्कबुक जो है वो कर लेनी है। ये मैंने भेज भी दी थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने भेजी भी थी। पता नहीं किसी ने ग्रुप चेक किया है या नहीं किया। आई होप सबने ले ली होगी। खैर आ जाए, वापस आ जाए शॉर्ट टर्म कॉजेज के ऊपर। आप वापस आ जाते हैं। इन द शॉर्ट टर्म कॉजेज देयर वाज ओनली वन मेजर कॉज, that was called greased cartridge issue. Greased cartridge issue. British introduced new rifle. British introduced, जी बेटा, introduced new Enfield rifle. इस राइफल का नाम क्या था? Enfield rifle, in which greased cartridge was used, which was greased with cow, or which was greased with, कौन कौन सी 2 फैट्स यूज की गई थी? Pig and Pig cow. cow and pig.
पिग फैट्स। अच्छा बेटा, पिग फैट्स के साथ ये काउ और पिग से फैट क्यों लगाई जाती थी? ताकि जो कार्टेज है, ये जो कार्टेज आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर मॉइस्चर अगर चला जाए और इसका गन पाउडर, बेटा आप मैच बॉक्स से एक मैच स्टिक निकालें, उसको पानी से गीला करें, उसके बाद वो चलेगी? नहीं चलेगी ना। नो तो सर, यही अगर कार्टेज के अंदर मॉइस्चर चला जाए तो वो मॉइस्चर कार्टेज काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं तो करेगा सर। इसीलिए इसमें पिग और काऊ की फैट लगाई जाती थी, क्योंकि फैट जो है वो मॉइस्चर को नहीं जाने देता, अंदर मॉइस्चर खत्म कर देता है। तो हाउएवर British Indian sepoys came to know about fat. They refused to use and fought war for such attacks on their religion, as cow fat was sacred for Hindus, as cow fat was sacred for Hindu sepoys, and pig was prohibited to Muslim sepoys. Basically, ये वॉर स्टार्ट ही सिपॉइज की वजह से ये स्टार्ट हुई थी वॉर। दिस वॉर स्टार्टेड ड्यू टू सिपॉइज म्यूटनी। सिपॉइज की म्यूटनी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। सर वो मंगल पांडे और उसके फेलो सोल्जर्स ने रिबेल किया था। जी बेटा, अब यहां तक हमने, अब ये क्वेश्चन ये तो हमने कर लिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। Two questions can be given on the causes of War of Independence. The first question may be on 7 marks question. What can be the 7 marks question? आप में से कोई बनाएगा question? Can anyone make the 5? Sir, what were the reasons for War of Independence? Independence? Why was War of Independence? Why War of Independence started? Why was War of Independence started in 1857? This is the first question. Why was War of Independence started in 1857? Clear? तो आप मुझे बताएंगे हया, why was War of Independence started? ग्रीस कार्टेज इशू। इन्हीं को डेवलप कर देंगे तो दैट वुड बी आंसर। ग्रीस कार्टेज इशू को डेवलप कर दें, इकोनॉमिक कॉजेज को कर दें और रिलीजियस कॉजेज को कर दें तो दैट वुड बी द परफेक्ट एंड द बेस्ट आंसर। बेटा प्लीज must write greased cartridge in every 7 marks question related to causes. Clear? Online students, कौन सा पॉइंट मस्ट लिखना है? Greased carton. P1 में मस्ट में इसको लिख लें, P2 में आप बाकी मर्जी है आपकी, कोई भी कॉजेज आप ले लें, इकोनॉमिक ले लें, सोशल ले लें, रिलीजियस ले लें, मिलिट्री ले लें, इट इज entirely up to you, but greased cartridge is must. Done? ओके जी। 14 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो सकता है इस पे? क्या नाम है, अरेज 14 का हम क्या बना सकते हैं?
Yes, yes, beta. Can anyone make online student? Can we make? Yes, कोई बताएगा? Sir, name the causes of the War of Independence. सर अच्छा, name the की बजाय there would be one cause given by the examiner. You have to Sir, मैं write the बता other दूं? causes. The Yes, military beta. causes were the most सर important. Greece cartridge issue was main reason for start of War of Very Independence. good, very good. Greece cartridge issue was the most important cause of War of Independence in 1857. Do you agree or disagree? Give reasons. Give reasons. तो इसमें सबसे पहले बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो की पॉइंट होता है उसके कितने नंबर होते हैं आउट ऑफ 14? द पॉइंट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, how many points, how many marks this key point has out of 14? 7. 7 to 8 marks are reserved for explanation of key point of question, key point of in question. अब मुझे बताएं कि अगर आप इसके ऊपर 4 लाइनें लिख दें और इसकी वेल डिस्क्रिप्शन वीक हो तो आपके कितने नंबर जाएंगे 14 में से? अगर आपने ग्रीस कार्टेज, आपको पता ही नहीं है, अगर ग्रीस कार्टेज का फर्ज करें कि किसी को यही नहीं पता कि व्हाट इज ग्रीस कार्टेज और वो छोड़ आता है ग्रीस कार्टेज को, बाकी रीजन सारे लिखा आता है, ग्रीस कार्टेज छोड़ देता है, कितने नंबर जाएंगे आपके? सर 4 8 भी जा नंबर। सकते हैं। 8 नंबर तो वो जाएंगे जो आपके 8 नंबर तो वो जाएंगे जो ग्रीस कार्टेज ना लिखने पे गए। 2 नंबर ओपिनियन के भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओपिनियन तो बन ही आपकी तब सकती है जब आपने की पॉइंट और बाकी पॉइंट्स को अलग किया। तो टोटल आपको मिलेंगे सिर्फ 4 नंबर। तो इसलिए की पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आपके 4 से ऊपर नंबर नहीं आते 14 में, याद रखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप की पॉइंट मिस करते हैं तो आपके 14 वाले में कितने मार्क्स आते हैं? ओनली 4 मार्क्स। याद रखिएगा, 4 मार्क्स आपने लेने हैं या आपने 14 लेने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes. एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. No? Is it clear to all of you? अच्छा, can anyone take the screenshot and share in the group as well? ज्योग्राफी का काम रेगुलरली नहीं आ रहा।